सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हुए हैं। प्रकृति इस अध्याय में ब्रह्मांडं प्रति नारद प्रश्न ब्रह्मोक्ति तत्वानाम उत्पत्ति ब्रह्मांड निर्माण वर्णनं च, अर्थात ब्रह्मा जी के प्रति नारद जी का प्रश्न और नारद जी के प्रश्न का ब्रह्मा जी के द्वारा समाधान, ब्रह्मोक्ति तत्वानाम उत्पत्ति, किस प्रकार से सांसारिक या सप्त भुवनात्मक अधस्थलों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से ऊर्ध्व सप्त लोकों की उत्पत्ति हुई, इसका विशद व्याख्यान ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मांड निर्माण वर्णनम, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसका विशद वर्णन इस अध्याय में संप्राप्त होता है। आइए पारायण को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत् प्रभुः करामलकवद विश्वं विज्ञानावशितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मं भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टम्भ्य ऊर्णनाभिरिव क्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो नामरूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। स भवानचरद् घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंकां प्रयच्छसि। एतन्मे प्रक्षतः सर्वं सर्वज्ञः कालः सकलेश्वरः एतन्मे प्रक्षतः सर्वं सर्वज्ञः सकलेश्वरः विजानीहि यथेवेद महं बुद्ध्येऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्।
विलज्यमानया यस्य स्थातुम् इच्छा पथे मुवा विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदाः देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोकोः नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तमः इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिर्सर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणाः शयेस भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममचेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदीक्षया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद् गुणव्रतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत महस्तो विकुर्वाणात् द्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् श्रमभूत्रिधा वैकारिकतैजसश्च तामसश्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगं यदृष्टदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्शगुणो नीलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै रूपवद स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वन्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढाङ्घ्रिपायवः यदैते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणे न सेकुर्ब्रह्मवित्तमम् तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं सस्रजुर्हृदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुपदेशकम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः
सहस्रोर्वङ्घ्रिवाः वक्षः सहस्रननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां स्वर्लोको भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोको उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धवि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां न सातलं पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमः हरिः ओं तत्सत्। नमो नमः। Yeah.